Students, today we will study about the nitrogen fixation and nitrogen cycle. Now you will see there is 78% nitrogen in our atmosphere, which is very essential for all living organisms like plants and animal. Where is nitrogen found? Nitrogen is found in protein. The protein you are eating, they contain nitrogen, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. Plant and animal cannot use nitrogen directly from the atmosphere. There is a maximum amount of nitrogen in 78% in atmosphere, but plant and animal cannot take direct nitrogen. They get nitrogen through nitrogen fixation. Now we will study about the what is nitrogen fixation. Nitrogen fixation, it is a process in which atmospheric nitrogen gets converted in or fixed into soil into nitrogenous compound that can be used by the plants. यानी कि जो नाइट्रोजन है वो किस तरह से फिक्स हो जाती है? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड. नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स. नाउ अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम. Where is rhizobium found? Rhizobium is found in the roots of leguminous plant, which helps in the fixation of nitrogen. Yani it convert nitrogen into nitrogenous compound. Sometime nitrogen fixation even occurs when lightning strikes. Yani जब light आकाश में बिजली चमकती है, then also there is nitrogen fixation. Today we will try to understand nitrogen fixation process by nitrogen cycle. Blue and blue-green algae present in the soil convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compound. Bacteria, these are the two microorganisms which convert nitrogen into nitrogenous compound. These nitrogenous compounds are absorbed by the root. इनको कौन absorb करता है? Root. And carried to the other part of the plant. और ये दूसरे part प्लांट के दूसरे पार्ट्स पे पहुंचती है वेयर प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. when animals or human eat or consume these plant, nitrogen in the form of protein reaches into them. तो जो हम प्रोडक्ट्स खाते हैं तो किस फॉर्म में होता है? वो प्रोटीन की फॉर्म में. नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल नाइट्रोजन compound into the soil by the bacteria and fungi which are reused. यानी जो ये डेड डिकेइंग मैटर है किसका? प्लांट एंड एनिमल का. फिर इनको किस में दोबारा से यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड में पहले चेंज करते हैं, देन नाइट्रोजनस कंपाउंड से किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड में. कौन चेंज करता है? बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड विच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स. Some special bacteria convert nitrogenous compound into nitrogenous gas, nitrogen gas, and that goes into the atmosphere. यानी जो नाइट्रोजनस कंपाउंड पढ़ते हैं उनको दोबारा से किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजन गैस में. एंड दैट गोज बैक इनटू द atmosphere. So in this way amount of nitrogen in atmosphere is also constant. यानी कि इसका मतलब ये we are using nitrogen, then we are converting nitrogen. We मतलब plants and small microorganisms convert nitrogen into nitrogenous compound and nitrogenous compounds are back converted into the nitrogen, so amount of nitrogen always remains constant. तो इसमें देखिए this is atmospheric nitrogen. यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सिंग, बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बैक्टीरिया इन टर्न नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, फिर कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल, देन बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन. यानी जो कंपाउंड्स बने थे वो किस में चले गए? दोबारा से नाइट्रोजन में. देन दिस इज द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल अपटेक बाय द प्लांट. इसको कौन लेता है? प्लांट. और इससे क्या बनता है? प्रोटीन बनते हैं. देन एनिमल ईट प्लांट, देन नाइट्रोजनस वेस्ट from excretion and death, then these are gone into soil, then soil say they are again converted into the nitrogen. So this is the cycle which goes on, so the amount of nitrogen remains constant in the atmosphere. Which bacteria is found in the root of beans and peas? Rhizobium bacteria. What are the different method by which nitrogen fixation take place? These are the different method how they can convert it into, try to understand
by nitrogen fixation process by nitrogen cycle. Why is nitrogen necessary for all living beings? Because it is the major constituent of proteins, chlorophyll, nucleic acid, vitamins. You don't have to write this chlorophyll for human. For human, it is used in protein, nucleic acid, and vitamins. For animals and for plants, it is used for chlorophyll. How does amount of nitrogen in the atmosphere remain constant? Some special bacteria convert nitrogenous compound into nitrogen gas and goes into atmosphere. In this way, amount of nitrogen in the atmosphere is always constant. So these are the questions which are discussed. Now you will do this exercise in your notebook and will send me the work done by you.